Hello, my dear students. Welcome back in our today's class. And here we are in the chapter number 7, that is lenses. Okay, so before moving to our today's topic, as usual, let's revise the content which we have learned in our last class. And in our last class, we have learned a very interesting topic, that is human eye and working of its lenses. So as you all know that this is called as what? Here in the eye, this is called as eyelid. Okay, yes, then the black wala part over here, this is called as what? Pupil. Okay, here the white wala thing is called as what? Sclera. Okay, and here you can see the blue color wala part. Okay, so it is called as what? Iris. It is different for the different people. Okay, and here in the last you can see the black wala part, very corner, at the very corner you can see this. Yes, so that is called as what? Corners. Okay, yes, so this is a basic structure of eyes, but here you can see the construction of human eye in very detail. Okay, so this we have learned, that is there is a very thin transparent cover membrane. Here you can see on the human eye, here you can see the very first membrane जो बहुत ही thin होती है उसको क्या बोलते हैं? That is called as what? That is called as cornea. ओके, एंड लाइट जो है वो कॉर्निया से ही एंटर होती है. ओके, यस, देन देर इज़ अ डार्क फ्लैशी स्किन which is behind the cornea. Here you can see the dark fleshy screen. So that is called as what? That is called as iris. Here you can see the iris. Okay, yes, and the color of iris is different for the different people. For the some people it is blue, for the some people it is black, brown. Okay, yes, as per the structure of eyes. Yes, then there is a small hole of changing the diameter at the center of iris. Here you can see, yes, so that is called as pupil. Okay, and the pupil control the amount of light which enters in the eye. Okay, yes, then here you can see there is a double convex transparent crystalline lens just behind the pupil. Okay, here you can see the convex lens. ओके, याद है ना कैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, कैसे कॉन्केव लेंस होता है? येस, सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच ओवर हियर you can see. Yes, so the lens provides small adjustment of the focal length to focus the image. Okay, and then what remains? Yes, this screen, there is one screen here you can see, that is called as retina. रेटिना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. अगर रेटिना ख़राब हो गया तो कुछ भी नहीं दिखेगा. ठीक है, सो रेटिना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई. ओके, येस, so this is about the structure of eye which we have learned in our last class. Then after that what we have learned, students, that is, let's see. Okay, so then we have learned that while seeing the objects at a large and infinite distance, what happened? The lens of the eye becomes flat and its focal length जो है वो increase हो जाती है. It becomes flat. Okay, and its focal length increases as per the shown in the here you can see. Okay, while seeing the nearby object, the lens becomes more rounded एंड इट्स फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है. यहाँ पे देखो, ओके, वो क्या हो गए हैं? मोर राउंडेड हो गए. हियर यू कैन सी. ओके, सो दिस वे वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली irrespective of their distance, and the capacity of the lens to change its focal length as per the need is called as what? Power of accommodation. Yes, so till this we have learned in our last class, and today also we are going to see a very interesting topic, that is the defects of vision and their correction. Defects मतलब क्या होता है? Yes, defect is something which is like कमियाँ. ओके, yes, so defects of vision मतलब क्या? देखना. तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है? ठीक है, लाइक दैट. सो दैट वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू करेक्ट दिस ऑल्सो. ओके, सो स्टूडेंट्स,
Some people cannot see the things clearly due to the loss of accommodation power. Yes, accommodation power जो है उसकी capacity कम हो जाती है. So accommodation power of the lens in their eyes, because of defective refraction by the lenses, their vision becomes faint and fuzzy. Fuzzy मतलब क्या? Blur. Okay, blur दिखाई देता है like that. So in general there are 3 types of refraction defects. तो कितने टाइप्स के रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स है? 3 टाइप्स. लेट्स सी दिस 3 टाइप्स वन बाय वन. ओके, so the first is called as nearsightedness or it is called as myopia. The word is little bit like that, but you have to understand it. myopia अगर ध्यान में रखना है तो उसके साथ नियर साइटेडनेस भी ध्यान में रखना है. सो 2 names are very important. Okay, so yes, the first condition is nearsightedness and as well as it is also called as myopia. So in this case what happened? Okay, so here in this case the eye can see nearby objects clearly but the distant object appear indistinct. तो इसमें हमारा आई जो है वो नियर ऑब्जेक्ट है. अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे नियर बाय है तो वो अच्छे से दिखाई देता है, बट दूर का जो है वो थोड़ा सा इंस्टिंक्ट दिखाई देता है, लाइक अ ब्लर काइंड ऑफ थिंग, और किसी को दिखाई भी नहीं देता दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो, लाइक दैट. ठीक है. सो दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इंफिनिटी बट शिफ्ट्स क्लोजर टू द eye. Here you can see the light ray is incident over here. Okay, it gets refracted. और ये जो है वो कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है? यहाँ पे रेटिना पे. तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होना चाहिए. अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ से देखो. ओके, सो देन वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. Okay, so here in nearsightedness the image of a distinct object forms in front of the retina. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इन द सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गया है? ये रेटिना है, तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होना ही चाहिए. बट अब आप देखोगे तो रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्म हो गया. Here you can see a very clearly. Okay, these 2 condition, this is a very clear condition, but here you can see image retina के पहले ही यहाँ पे फॉर्म हो गया. ठीक है. Yes. So there are 2 reasons for this defect. First, the curvature of the cornea and the eye lens increases. Okay, curvature मतलब क्या? Curve. Okay, ये जो curve है of the cornea and the eye lens increases and the muscles near the lens cannot relax. मसल को रिलैक्स होना चाहिए बट इट कैनॉट रिलैक्स, सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज. और इसकी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, आई होप यू ऑल नो दैट. ओके, सो वो क्या होता है? इट रिमेन्स लार्ज. वो लार्ज जैसी रहती है वैसी ही रहती है, इट रिमेन्स लार्ज. एंड द सेकेंड कंडीशन इज the eyeball elongates so that the distance between the lens and the retina increases. eyeball जो है वो बहुत लार्ज हो जाता है. अगर हमको दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती तो हम क्या करते हैं? आँखें जो है वो थोड़ी बड़ी करते हैं, लाइक दैट. सो आईबॉल जो है वो इलोंगेट्स हो जाता है सो दैट द डिस्टिंग बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस. ठीक है. येस. सो हाउ टू करेक्ट दिस? How to correct this nearsightedness? So there is one kind of correction. This defect can be corrected by using spectacles with concave lens of proper focal length. तो यहाँ पे concave lens का use हो जाता है. Here you can see this is the concave lens which is used over here in the spectacles. गॉगल में और चश्मा like that. In that क्या use होता है? concave lens. Okay, this lens diverges the incident ray and this diverged rays can be converged by the lens in which in the eye to form the image on the retina. तो ये क्या करता है? कन्वर्जन में बहुत सारा हेल्प करता है कॉन्केव लेंस. ओके, और उसकी वजह से ही इमेज जो अपना यहाँ पे था, ओके, रेटिना के पहले ही फॉर्म हो रहा था, वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? अभी यू कैन सी द इमेज विल फॉर्म एट द रेटिना. जैसे फर्स्ट कंडीशन थी वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या यूज़ किया है? कॉन्केव लेंस फॉर द करेक्शन.
Okay, yes. So the focal length of concave lens is negative. You all know that? Yes. So a lens with negative power is required for correcting nearsightedness. तो नियर साइटेडनेस में कौन से लेंस का यूज़ हो जाता है? कॉन्केव लेंस. ओके, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट आई डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर नियर साइटेडनेस. तो ये तो डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट आई. ओके, सबकी आईज जो है वो सेम नहीं रहती. ओके, उसकी लेंथ एंड लाइक दैट. So it is all obviously it is different for the different eye. Okay, depending upon what their magnitude of their nearsightedness. ठीक है. सो नियर साइटेडनेस में क्या ध्यान में रखना है? हम नियर की चीज़ें जो है वो देख सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे दूर है, हमारे से बहुत फार है, तो वो हम क्लियरली नहीं देख सकते. सो फॉर दैट विच वी विल यूज्ड, व्हाट थिंग्स वी विल यूज्ड, विच लेंस वी विल यूज्ड, दैट इज़ अ कॉन्केव लेंस. ठीक है. ओके, देन द सेकेंड इज फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोफिया. तो ये सेकेंड है. हियर यू कैन सी फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोफिया. दोनों में से दोनों भी नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं. सो इन दैट कंडीशन यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज्ड दैट व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोफिया. हाइपरमेट्रोफिया मतलब क्या था? सो ये कन्फ्यूजन नहीं चाहिए. सो फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस टू वर्ड्स. ओके. So in this defect what happened? The human eye can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly. Far, वहाँ पे क्या था? नियर. नियर था मतलब क्या ध्यान में रखना है? नियर की ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे तरह से देख सकते हैं. और यहाँ पे फार साइटेडनेस, उसमें क्या ध्यान में रखना है कि फार मतलब दूर का जो है वो हम देख सकते हैं. ओके, बट पास का जो है वो नहीं देख सकते. ओके, सो दिस मीन्स दैट द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्ट्स फर्दर अवे. ओके, तो 25 सेंटीमीटर वहाँ तक जो है वो हम clearly here you can see. Okay, so as shown in the figure, here you can see that the image of nearby object gets formed behind the retina. तो as I have told you that image जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो जाता है? रेटिना पे ही फॉर्म हो जाना चाहिए. ओके, रेटिना पे ही फॉर्म होना चाहिए. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इन हाइपरमेट्रोफिक आई, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? रेटिना के पीछे. रेटिना के पीछे. ओके, इन फर्स्ट कंडीशन जो थी नियर साइटेडनेस में कहाँ पे फॉर्म हो रहा था? रेटिना के बहुत पहले फॉर्म हो रहा था, राइट. तो इसलिए हम लोगों ने कॉन्केव लेंस यूज़ किया. बट अभी यहाँ पे देखोगे तो रेटिना के बाद इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल यूज़? कॉन्वेक्स लेंस. सो दैट वी विल सी. ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही ध्यान में रखना है कि फार साइटेडनेस में इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो गया. ठीक है. येस. So there are two reasons for farsightedness. Okay, farsightedness. Curvature of the cornea and the eye lens decreases so that the converging power of the lens become less. Okay, तो लेंस का कन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत लेस हो जाता है. ड्यू टू द फ्लैटनिंग of the eyeball, the distance between the lens and retina decrease. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है. सो हाउ टू करेक्ट दिस? येस, वी हैव टू यूज विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, because it has a diversion power. Okay, so this defects can be corrected by using a convex lens with the proper focal length. Proper focal length use करनी है. So this lens converges the incident rays before they reach the lens. ये कन्वर्ज करता है इंसिडेंट रेज को बिफोर दे रीच टू द लेंस, एंड द लेंस देन कन्वर्ज देम टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना. और वो किस में यूज़ हो जाता है? इमेज फॉर्म होने में. कहाँ पे इमेज फॉर्म चाहिए हमको? रेटिना पे ही चाहिए. ओके, येस. सो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. येस. ओके, thus the spectacles used to correct far-sightedness has positive power. Yes, and the power of these lenses is different
for the depending upon the extent of far sightedness. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन इज प्रीसबायोफिया. प्रीसबायोफिया ये जनरली किस में होता है? दिस हैपन्स यूजुअली फॉर द ओल्ड पीपल. दिस इज फॉर द ओल्ड पीपल. ओके, जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विद द एज. ओके, जैसे एज हो जाती है वैसे the muscles near the lens lose their ability to change the focal length of the lens, and the near point of the lens shifts further from the eye. And because of this, what happened? Old people cannot see nearby object clearly. Okay, sometimes people suffer from nearsightedness as well as far sightedness. तो old people में दोनों भी defects दिखाई देते हैं, that is near sightedness. ओके, नियर साइटेडनेस मतलब उनको सिर्फ किसका दिखता है? नियर वाला पार्ट ही दिखाई देता है, दूर का नहीं. बट एंड फार साइटेडनेस ऑल्सो, दूर का दिखाई देता है, नियर का नहीं. तो दोनों कंडीशन उनको उनमें होती है. इन सच केस व्हाट हैपन? बाय फोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. तो इन दिस केस व्हाट हैपन? दो लेंसेज लगेंगे, for one for nearsightedness and one for farsightedness. So in such case the upper part is concave lens. अपर पार्ट जो है उसमें क्या लगाते हैं? कॉन्केव लेंस लगाते हैं एंड करेक्ट्स नियर साइटेडनेस. ओके, येस, वाइल द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच करेक्ट्स द फार साइटेडनेस. तो कभी कभी हम ओल्ड पीपल में भी देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो चश्मे के ऊपर से देखते हैं. ओके, येस, एंड कुछ लोग जो है ओल्ड पीपल दे कैन सी फ्रॉम चश्मे के नीचे से देखते हैं. आई होप यू इमेजिन दिस. ठीक है, येस. सो हियर इन दिस व्हाट हैपन? द टू कंडीशन विल अप्लाई टू देम, दैट इज नियर साइटेडनेस ऑल्सो एंड फार साइटेडनेस ऑल्सो. तो नियर साइटेडनेस को कैसे दूर करेंगे? कॉन्केव लेंस के थ्रू, एंड फार साइटेडनेस को कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम दूर करते हैं. ठीक है, ओके. Here you can see the apparent size of an object. So what is shown over here? Consider two objects PQ and P1Q1. Okay, having same size, but kept at a different distance from an eye. Eye यहाँ पे है, as shown in the figure. Okay, as the angle A is subtended by PQ, angle A, okay, PQ यहाँ पे form हुआ है, at the eye is larger than the angle B subtended by P1 Q1. Okay, P1 Q1 ये जो यहाँ पे है. Okay, thus the apparent size of an object depend on the angle subtended by the object at the eye. Okay, तो apparent size जो है वो कहाँ पे कैसे depend होती है? Depending upon the angle which is subtended by object at the eye. Okay, then स्टूडेंट्स, देर आर वेरियस यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज. कॉन्केव लेंस कैसा होता है? इमेजिन, फर्स्ट उसका इमेजिनेशन करना है. कॉन्केव लेंस, ओके. सो देर आर वेरियस यूजेस. सो इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट, ऑब्वियसली, स्कैनर, CD प्लेयर. सो दिस इंस्ट्रूमेंट्स यूज लेजर लाइट, आपको पता है. फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस इक्विपमेंट कॉन्केव लेंस इज यूज्ड. द पीप होल इन द डोर. ओके, तो डोर का होल आपको पता है, सबको पता है, कॉन्केव लेंस उसमें यूज़ होता है. सो दिस इज़ अ स्मॉल सेफ्टी डिवाइस विच हेल्प्स अस टू सी अ लार्ज एरिया आउटसाइड द डोर. आउटसाइड द डोर, डोर के पीछे कौन खड़ा है बहुत दूर तक वो हम देख सकते हैं. सो दिस यूजेस वन और मोर कॉन्केव लेंसेज. ओके, स्पेक्टाकल्स. ओके, स्पेक्टाकल्स में तो यूज़ होता ही है. Concave lenses are used in spectacles to correct nearsightedness. Yes. Torch. Okay, yes, torch में भी concave lens use होता है. Concave lens is used to spread widely the light produced by a small bulb inside a torch. Okay, तो torch के अंदर जो small bulb है उसमें से बहुत बड़ी वाली लाइट जो बहुत ऐसे फैल जाती है. ओके, एंड दूर का दिखाई देता है, लाइक दैट. So for that it is used. Then camera, telescope and microscope. Okay, these instruments mainly use a convex lenses to get a good quality image. A concave lens is used in front of the eyepiece or inside it. Eyepiece मतलब क्या? जहाँ पर हम
माइक्रोस्कोप में आइज़ रखते हैं, ओके, जहाँ पे हम आइज़ रखते हैं वहाँ पे क्या यूज़ हो जाता है, कॉनकेव लेंस. ओके, yes, so this is all about today. So today we have learned a very interesting topic, that is defects of vision and their corrections. Okay, apparent size of the objects and uses of concave lenses. Thank you.